वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या होता है, तो आज इंट्रोडक्शन ड्रग्स का देखेंगे। तो वेलकम टू साइंस यूथ यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करेंगे आज का इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशंस ऑफ ड्रग्स: ए ड्रग्स इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू डायग्नोज, ट्रीट, केयर और प्रिवेंट डिसीज. इट कैन बी also used to relieve symptom and alter physiological process, modifying mental state. Drugs can be natural or synthetic origin and are designed to interact with specific target in the body to produce desired effect. तो ड्रग्स मोस्टली यूज़ होता है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। आगे देखे थे, ड्रग्स इज अ सब्सटेंस दैट इज यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. इट इज डिजाइंड to diagnose, treat, care, or prevent disease and health conditions. Additionally, drugs can be used to alleviate symptoms, modify physiological process, or alter mental state to achieve therapeutic outcome. ओके तो इस सेंटेंस में बोल रहा है, तो ड्रग्स इज हम मेडिकल फील्ड में वेरियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस बनाने के लिए, ट्रीट, केयर, प्रिवेंट ऑफ डिसीज, the health conditions. Additionally, drugs are also used to support modify the physiological changes. ऐसे therapeutic outcome भी उसे निकाल सकते हैं. तो drugs can origin from natural source such as plant, animal, fungi and microorganisms, or they can be synthetically manufactured in laboratory. Drugs natural source जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से मिलता है और उसे मैन्युफैक्चर करके लेबोरेटरी में से उसको प्रोडक्ट तरीके हम उसमें से ले सकते हैं. किस किस नेचुरल सोर्स में से, तो याद रखना, प्लांट, एनिमल, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. सेकंड इज अ ड्रग्स. तो ड्रग्स डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रोग. ड्रग्स फ्रेंच वर्ड में ड्रग्स बोला जाता है. उसका प्रॉपर डेफिनेशंस देखेंगे. ए सब्सटेंस which is utilized in the prevention, diagnosis, treatment or care of disease in a man or other animal. According to WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ड्रग्स का डेफिनेशन डिराइव कर रहा है कि एनी सब्सटेंस विच इज़ यूज और इंटेंड टू बी यूज मॉडिफाइंग और एक्सप्लोरिंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट. ओके, आपको याद रखना है डेफिनेशंस ड्रग्स की, और WHO कैसे उसको डिराइव करता है वो भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट देखेंगे सोर्स ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स कैसे हमें मिलता है, तो सिंपली नेचुरल ड्रग्स. Plant have been rich source of medicinal compound for countries. Many drugs such as aspirin derive from blowberg, morphine and quinine have may be isolated from plant. Second is animal. Some drugs are derived from animal source. For example, heparin and anticolon extracted from the muscle tissue of pig and cows. Third one is a fungi. Fungi such as a mold have also provide valuable drugs. फंगी में आपने मोल्ड देखा होगा, जो हमें उसमें से एक वैल्यूएबल ड्रग मिल रहा है, पेनिसिलिन. द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. याद रखना, एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज अ डिराइव फ्रॉम पेनिसिलियम मोल्ड. ओके. फोर्थ वन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Bacteria and other microorganisms have been a source of antibiotic and other drugs. Some example of antibiotic derived from microorganisms. सिंथेटिक सोर्स देखेंगे, तो सिंथेटिक डोज क्या है, तो लेबोरेटरी सिंथेसिस और एडवांटेज और एग्जांपल
वो सब सिंथेटिक सोर्स। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा ड्रग का, उसके बाद उसका डेफिनेशंस, WH का डेफिनेशंस, उसके बाद उसका सोर्स, नेचुरल सोर्स देखा, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सिंथेटिक सोर्स। तो लेबोरेटरी सिंथेसिस, तो synthetic drugs are chemically manufactured in a laboratory through a series of chemical reactions. These drugs are designed to mimic effect of natural compounds or they create entirely new therapeutic agent that may not exist in nature. Okay, second one is advantage. Synthetic drugs offer several advantages including the availability, modifying chemicals structure for improve efficacy, reduce side effect, and increase potency. They also allow for mass productions and standardizations of drug formation. ओके ये सब है उसके एडवांटेज। लेबोरेटरी सिंथेसिस एडवांटेज, और उसका हम एग्जांपल देखेंगे। मैनी कॉमनली यूज्ड ड्रग्स सच एज पैरासीटामोल, statins, and synthetic compounds that have been developed through chemical synthesis. Both natural and synthetic sources play a circular role in drugs discovery and development. Natural sources provide a foundations for many important drugs, while synthetic sources offer opportunities for innovations and creations of novel therapeutic agents. The combinations of knowledge for traditional medicines and modern chemistry continue to drive discovery of new drugs to address various health conditions and improve patients' care. उसके बाद देखेंगे requirement of ideal drugs. Efficacy. An ideal drug should be demonstrate effectiveness in treating to specific conditions or disease is a intent for it. It should be produce the desired therapeutic effect and the appropriate dose and durations of treatment. Safety. Second one is safety is a critical aspect of drug development. The ideal drug should be minimal side effect and be safe for use the target populations. The benefit for using drug should be outweigh the potential risk associated with its administration. Selectivity. Selectivity refers to drugs available with target specific receptor enzymes or pathway in the body related of disease without affecting unrelated drugs. This specificity helps minimizations of drug effect and reduce the likelihood of adverse reactions. Fourth one is a stability. The chemical stability of drugs essential to ensure that it's retain its potency and efficacy over time. Proper storage conditions and formulations are circular to maintaining drug stability throughout its shelf life. Bioavailability. The bioavailability may refer to intact, the rate of which drugs reach its target site in the body, produce the desired pharmacology effect. The ideal drug should be have a bioavailability to ensure optimal therapeutic outcome. And sixth one is as of administrations, the ideal drug should be easy to administer throughout the various routes and such as oral, intravenous, and topical depending on the conditions being treated. Additionally, the drug's regimen should be convenient and easy for patients to follow the ensure treatment adherence.